Welcome to Shiksha Kranti. Today we learned many vocabulary words. One of them was self-conscious. Sir, what is the meaning of self-conscious? Well, self-conscious means to be conscious about self, but not positively, negatively. When we are over concerned about our image, about our personality, about our look, about our clothes, about our talk, about our walk, then we start growing self-conscious. To be self-conscious is the biggest obstacle in your way of improving your communication skill. So one should not be self-conscious about anything. Is becoming self-conscious good or bad? I think how can it be good? Because if you are too much concerned about yourself, how can it be good? I think it is bad because nobody can start the journey of self-realization if he is too much into his own image, if the world around him is too much with him. So the world around us should not be too much with us at all. So self-consciousness is not good at all. I think we should be conscious about ourselves. We should not be self-conscious, because consciousness about ourselves is quite different from to be self-conscious. Self-conscious is here negative term. It is not good at all to be self-conscious. And you might have seen when we teach students, why is it so that they hesitate in answering also? Why is it so? Have you ever thought? It is because most of them have their friend. There is peer pressure kind. They fear if they perform poorly in the classroom, their friends will come to know. Their parents will come to know. Society will come to know. So there is kind of pressure on them. So we call it peer pressure also. I think the first step in this journey of learning communication is to overcome your sense of self-consciousness. So one should get rid of self-consciousness. We have moved towards next journey, that is hurdle in communication. You said that one of the hurdles in communication skill is becoming self-conscious. We should not be self-conscious, we should become conscious of self. Sir, my question related to this is that sometimes when we speak and becoming conscious about what we are speaking and becoming conscious about how we are behaving, so is it a sign of awareness? Don't be self-conscious, be conscious about self. So it means that we are using consciousness first. So you are becoming aware of self. To be aware of self means self-confidence. To be aware of self means self-esteem, self-worth, which we call Atm Samman in Hindi. आत्म सम्मान और संकोची होने में कितना फ़र्क है? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है संकोची होना, कॉन्शियस अबाउट सेल्फ का मतलब होता है कि आत्म सचेत होना, सजग होना, जागृत होना. तो जितनी भी हमारी अध्यात्म की जो यात्रा होती है बिना सजगता के संभव नहीं हो सकती है. अध्यात्म के आप जीवन की कोई भी आप जीवन का whatsoever station of life you are living in, if you are not aware of who you are, I don't think that you can take even a step in the journey of life. So what is needed is self-awareness. Be conscious of self, don't be self-conscious, I think. As we know that there are many hurdles when we learn communication. Hurdles can be mental, physical and emotional. So sir, how we can overcome these while learning communication? When we start the journey of learning communication skill, there are so many hurdles and obstacles coming in our way, and the question arises how we can overcome those hurdles. The best way is, first thing, you should not be self-conscious, because the biggest hurdle I have seen in the path of learning communication is to be self-conscious. When student comes here, sometimes we expose him to media, we bring him face to face with camera, and when he starts speaking,
First, he will be very shy, he will be afraid, he will fear society around him. Behind this self-consciousness is nothing but fear only. Fear is the biggest hurdle. And ये लोग सबसे बड़ा रोग. People will say this, I will not be able to do this. And moreover, when we talk about the journey of self-realization, when we talk about आत्मबोध की जब हम यात्रा की बात करते हैं, then how will you realize yourself? You cannot realize yourself without identity. Can you do away with your identity as regards your parents? No. Can you do away with, or can you stop identifying yourself as woman? No, not that easy. You cannot immediately say that I have risen above this man and woman, now I am a soul. It's not that easy. So you need to respect. So I am of the view that first you need to identify yourself, what you are. First you need to identify yourself with who you are, what you are, where you have come from. When you have understood your identity very well, I think then there is possibility that you will rise above this sense of self-consciousness, and then you will become conscious about self, and self-realization will dawn on you. Do you know most of the problems are because of our identity with body, our identity with parents, our identity with culture, our identity with good hairs, our identity with Swachhtagrahi. So these are the problems, but at the same time we cannot do away with them. We need to understand them. Once you have understood these barriers, emotional barriers, social barriers, cultural barriers, or you call hurdle, once we have understood these hurdles, I think it's very easy to overcome them. It is nothing but realization, both we call it, that help overcome the worldly identity, these worldly पहचान. क्योंकि किसी भी इंसान को आत्मज्ञान नहीं हो सकता है जब तक वह अपनी पहचान का सम्मान नहीं करता है. बड़े बड़े जैसे विचारक हुए हैं, कल ही मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, ओशो, कृष्णामूर्ति, इस तरह की वो डिबेट कर रहे थे कि वो लोग ऐसे रहे हैं कि जो कहते हैं कि अपनी पहचान को फेंक दो, कल्चर क्या रखा है. मैं उनकी बातों से सहमत हूँ. ठीक है, वो कहते हैं कि एक मुस्लिम बन गया, एक हिंदू बन गया, एक सिख बन गया, एक जैन बन गया, एक ढिमका बन गया, एक फलाना बन गया. कहते कुछ ज़रूरत नहीं है. अगर आपको आत्मबोध चाहिए तो इनको ज़रूरी नहीं कि अपनी पहचान उनसे जोड़ी दो. पर मुझे लगता है कि अगर हमारी स्वाभाविक किसी से पहचान हो गई है तो होने दो, लेकिन हमें उस पहचान से ऊपर उठना है. अगर हमें आत्मबोध की ओर जाना है, अगर हमें आत्म ज्ञान चाहिए, अगर हमें उस अनुभूति को प्राप्त करना है जो बिल्कुल आनंदमयी है, एक्सटैटिक है, जहाँ पे हमारे दुख दूर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें जो हमारी पहचान है उसको पहचानना होगा. मेरी पहचान पुरुष है तो मुझे जानना होगा कि मेरे पुरुष होने के नाते मेरा शरीर क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग कर रहा है, क्या पहचान है, उसकी सीमाएं क्या है. यानी समझ विकसित करनी होगी. और जब वो समझ विकसित होती है तो हमारा आत्मबोध, हमारा ज्ञान उस पहचान और उस मांग से धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है. ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी अनुभूति है. तो शिक्षा क्रांति मंच से या जितने भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अगर संप्रेषण कला सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्किल सीखें जिससे कहीं ना कहीं आप मुक्ति की ओर जाएं. यानी आप हल्का महसूस करें. ये ज्ञान, ये भगवान, ये बातें, ये बोझ ना बने. मुझे ऐसा लगता है कि जिस मनुष्य की जितनी ज़्यादा वो पहचान शरीर से करता है, उतना वो बंदा बंदा महसूस करता है. वो भीड़ में जाने से कतराता है और वो सबके सामने अपनी बात बेबाकी से रखने में घबराता है. तो आज का जो विषय है सेल्फ कॉन्शियस, तो आज इस सेल्फ कॉन्शियस को दूर करो और कॉन्शियस ऑफ सेल्फ को लाओ. और जब कॉन्शियस ऑफ सेल्फ होंगे तो आत्मबोध की ओर जाएंगे, आत्मज्ञान की ओर जाएंगे. और दूर क्या करनी है? सेल्फ कॉन्शियस. और दूर कैसे होगी? वो दूर इसलिए होगी कि ठीक है, एक हद तक सही है,
शालिनी के बाल कितने सुनहरे ब्लॉन्ड, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, सौंदर्य बोध है, अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सौंदर्य बोध ही बंधन बन जाए, बांधे, और इतना ज़्यादा शालिनी अपनी शान में रहे कि एक दिन वो परेशान ही हो जाए। तो इसीलिए शान हो, लेकिन उस शान के साथ पहचान भी हो, और पहचान से ऊपर उठने का काम भी हो, और नहीं तो क्या होगा, जिसकी शान होती वही परेशान भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सबसे बड़ा सबक कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए यही है कि कम ऑन, क्या दुनिया वाले क्या दे देंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या दे देंगे, लेकिन दुनिया वालों की कदर भी करनी है, क्योंकि दुनिया, आपके माता पिता दुनिया से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, पर एक बिंदु हो, एक पॉइंट हो जहाँ तक हमें उनको पहचानना है, मानना है। तो यह थे सेल्फ कॉन्शियस, जो इनका प्रश्न था कि सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, और सेल्फ कॉन्शियस हमें दूर करना है, कॉन्शियस ऑफ सेल्फ होना है। वी शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस, वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ सेल्फ। कॉन्शियस ऑफ सेल्फ का मतलब होता है आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचेतना, सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्या क्या मैं कहूँ, कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास, विश्वास है जिसका आत्म में। मुझे लगता है कि आप में है ऐसा विश्वास, ऐसा लगता है। I understood that communication should culminate in self-realization. Then question arises how we realize our self. So in the journey of self-realization, we should identify our individuality. Yes, she has said very nicely, because if we are real, if we are true to ourselves, then we can learn so many things, and then we can understand the real meaning of whatever is happening around us. So I hope this session will be helpful to you, to all our viewers. So I think you should take care of self consciousness. So you should not be self conscious, you should be conscious of self. So this is the main thought of our today's session. If you like this video, subscribe to our channel. That's all from our side. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.